Hi guys, so we are just ready to upload the next chapter in the sequence, and now this time we have taken the second book, which is named as Footprint Without Fit, and the first chapter is A Trump of Surgery. Now, as you're already aware of, our YouTube channel's name is Learn with Ravi, and now talking about the contents. Now, this is the book named Footprints Without Fit, Cbse Class 10th English Syllabus, and the chapter's name is A Trump of Surgery. So we are going to provide you explanation, summary, central theme, conclusion, and some question and answers. Only some question and answers important from the board's perspective. Now, I just behind down with Ravi, our YouTube channel, me, and next. Now here goes the chapter, The Trump of Surgery. Now, three characters has been briefly elaborated out in this chapter, and the first one is Tricky, who was a small dog, Mrs. Pamphlet, the owner, and the narrator, who was basically a veterinary surgeon. So, Mrs. Pamphlet, basically, she was a rich and emotional lady who has a cut dog called Tricky, and she was not having any kids of her, so she loved Tricky in the way a mother loves her children. So she was quite attached with that pet dog, and she always tries to provide him all the comforts, all the luxuries of the life, the way our parents used to provide us. She loved him so much that she always overfed him. And as a consequence, Teki had put out on a lot of weight, and hence he became very lethargic. Now, when Dr. Harriet, again, narrate his name, now when Dr. Harriet saw the fat dog, he was quite shocked. Then he made a plan and told Mrs. Pompley that Tricky must undergo for treatment at the of the ailments in the hospital. Now, what was the ailment? He was overfeeded and he became very lethargic. And there, the greedy dog had to compete with other dogs to get food. Where? In the hospital of Dr. Harriet. Otherwise, he had to remain hungry. So soon he lost a lot of his body weight and therefore he became quite active. Now, when Tricky was at the home, he was having a luxurious life. When he was residing with Mrs. Pampre, he was heading a luxurious life. But when he came to the doctor, he became all right due to the natural lifestyle. And our doctor have kept him in his hospital in a natural lifestyle, giving him foods at the regular interval of time, and in the same manner in which he was supposed to give foods to other pets. So when Mrs. Pampre saw her active dog, she thanked the doctor a lot, and she felt that it was a trump of surgery because she cared for the dog a lot. Okay, so now moving ahead. Here are some words and meanings. You can have a look on the words and meanings. Next page is also word and meaning. Now, summary. So, three characters already discussed. Tricky, a pet dog, narrator Mr. Harriet, and Mrs. Pampre was Tricky's owner. Uh, the narrator, whose name was Mr. Harriet, he was basically a veterinary surgeon and a writer also. He has written the story Trump of Surgery, and the story starts like when Mrs. Pampre, a rich lady, takes her dog Tricky for a walk outside. She meets with Dr. Harriet. A nearby veterinary doctor, Mr. Harriet, he saw the dog and was in a shock as the dog looks like a bloated sausage having leg at each end. Then he advised her to whom he advised? He advised to Mrs. Pampre. He advised her to stop giving him tides, but Mrs. Pampre is not able to refuse the dog. And so soon, Tricky fell sick and the doctor was called on. Now, the narrator, Mr. Harriet, somehow takes Tricky to his hospital for the treatment, even knowing the fact that Mrs. Pampre will never leave the dog. He took the dog along and puts a bait for him in his surgery. So for 2 days, the dog did not move much and also did not eat anything. On the third day, he wanted to go outside, and there he started playing with the bigger dogs. So now he was like kept in a natural habitat. He also licked the balls of other dogs to eat the remaining food. So the dog's condition started improving very rapidly. Also, he started fighting for his meals with other dogs. So some physical activities he started getting indulged into. After hearing this news, Mrs. Pamphley started sending eggs to the hospital as she thought that
Tricky needed energy foods for recovery because again she was not having any kids and she always cared for the uh, Tricky in the way a mother takes care of a child. But Mr. Harriet and his partner started eating those eggs as morning breakfast. So the food item received from Mrs. Pampry house was not getting provided to Tricky. Instead, they was being eaten by Mr. Harriet and his partners. And also for improving Tricky's blood, Mrs. Pampry started sending wine in bottles. But again, Mr. Harriet consumed those. Who was Mr. Harriet? It was our narrator. Not only this, when she started sending brandy in bottles, they consumed that also. So after a few days, doctor took a wise decision and called up Mrs. Pampry as she was much worried. Now she was very careful and thinking all the times about the Tricky itself. And she came back to narrator's home to take the Tricky back home. Now Tricky was very happy to see her mistress and jumped into the car. Then Mrs. Pampry said that she won't be able to even thank him for this wonderful miracle. And she said that the surgery has been successful as Tricky was now cured. Okay, so I've given a clear synopsis of the summary here. And the final conclusion of this chapter is that parents should not be indulgent with their children which may harm them. So parents should not be indulgent with their children in a manner which harm their potentials. And now these all are the summary. If you want, you can have a look over it and note it down in your notebook. I have elaborated it in a very brief manner. And yes, here are some important question and answers from the bird's perspective only. There are so many question answers mentioned in the book, but I've only taken 2 or 3, uh, which questions are important from the bird's point. Now, what kind of a person do you think the narrator, a veterinary surgeon is? Would you say he's tactful as well as of having common sense? Of course, the narrator is a compassionate and an honest man, as he does not unnecessarily operate into Tricky. He goes out of the way to guide Mrs. Pumphrey that she should start keeping a strict check on Tricky's diet and his exercise schedule. He's tactful because he knows how to get Tricky to the hospital, and his common sense can be seen by simple fact that he just changed the eating and exercise schedule of Tricky, which helped him recover from his problem. And he did not unnecessarily put him on the medicines. So yes, we can conclude that the narrator was he was a surgeon, but a wise person also. Now, next question. Why is Mrs. Pampre worried about Tricky? Because she was not having any other kid, and she always considered Tricky as her own child. And Tricky was not eating anything since so many days because she already overfed him. So she was worried about his health. And he was also like vomiting and getting late on the rug, painting. And the next question, why does Mrs. Pampry think that the dog's recovery is a term of surgery? Yes, out of the 3 questions, I'm expecting 99% this question only from this chapter, otherwise no relevant questions. Why does Mrs. Pampry think the dog's recovery as a trump of surgery? Now, Tricky had recovered completely in 2 weeks. He had been turned into a hard muscle animal, and upon seeing Mrs. Pampre, Tricky ran towards her, jumped on her lap, and started licking her face. She was overwhelmed to see Tricky as well, and so she said a token of gratitude that it's a trump of surgery, because she was under the impression that the moment doctor took him away in his veterinary hospital, she thought that now the Tricky has to underwent a surgery to remove the ailments. But without performing any surgery, the doctor was able to do away the illness of Tricky. So she finally said it as a trump of surgery. Now let me quickly summarize it in Hindi also. Many of the students are demanding to summarize the stories in Hindi. सो ये कहानी मतलब तब शुरू होती है जब मिसेस पैम्परी जो है वो एक रिच लेडी है और अपने डॉग्स के साथ, उसके डॉग का नाम होता है पैम्परी, उनके साथ वो बाहर घूमने के लिए जाती है। वहाँ पर उसको एक एनिमल्स के डॉक्टर मिलते हैं जिसको हम वेटनरी डॉक्टर कहते हैं, और उन डॉक्टर का नाम था मिस्टर हैरियट, जो हमारे राइटर भी हैं, नरेटर भी हैं। तो जब डॉक्टर हैरियट उस डॉग को देखते हैं, ट्रिकी को देखते हैं, तो चौंक जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो डॉग था वो काफ़ी फूल गया था, मतलब खा खा करके, ठीक है। और वो मतलब एक पड़ोसी होने के नाते मिसेस पैम्परी को सलाह देते हैं कि भाई आप इसको इतना ज़्यादा खाना मत दीजिए कि आपके खाने के कारण से, एक्सेस खाने देने के कारण से, या आपके एक्सेसिव केयर देने के कारण से ये बच्चा, ये जो ट्रिकी है जिसको आप अपने बच्चे की तरह कंसीडर करती हैं, ये हद से ज़्यादा बीमार हो जाए। क्योंकि होता क्या है कि जब हम नेचुरल चीज़ों, हमारा बॉडी जो नेचुरल चीज़ों का एडिक्टेड होता है,
अगर वो नेचुरल चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं, तो फिर हम अपने लाइफ़ में कुछ कर नहीं पाते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं। मतलब अगर बैठे-बैठे हमें खाने को मिले, लाइफ़ के सारे कम्फर्ट्स हमें मिले, तो फिर हम क्या करते हैं, स्ट्रगल नहीं करते हैं। तो डॉक्टर ने उनको यही समझाने की कोशिश की कि आप इस डॉग को इसके नेचुरल तरीके से जीने दीजिए। अगर ये खाने के लिए रोड पे घूमेगा नहीं, इधर-उधर वॉकिंग नहीं करेगा, तो ये लेथार्जिक होता जाएगा और धीरे-धीरे इसकी बॉडी फैलती चली जाएगी। ये सेम कंडीशन ह्यूमन बीइंग्स के साथ भी होता है। हमें घर में हमारे पेरेंट्स सारे कम्फर्ट्स देते हैं, सारी सुख-सुविधाएँ देते हैं और हमें क्या होता है, हम उन चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमें ये लगता है कि अभी जो चीज़ हमें मिल रही है, ये हमें लाइफ़ टाइम मिलती रहेगी और फिर बाद में जब वो चीज़ें हमें नहीं मिलती है, तो बहुत ज़्यादा हम अफ़सोस करते हैं, रिग्रेट करते हैं अपने उन डिसीज़न्स के ऊपर। उन कम्फर्ट्स को हम अभी ये नहीं एनालाइज़ करते कि किस कॉस्ट पे हमें वो कम्फर्ट्स मिल रही हैं। हमें कम्फर्ट देने के लिए हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं और इवन इनफैक्ट हमें रियलाइज़ भी नहीं होने देते कि हमारे लिए कितना स्ट्रगल किया है उन्होंने। लेकिन हमें जो चीज़ें मिलती हैं, हम उसको ऐसा एज़्यूम करते हैं कि इस पे हमारा राइट है। हमारा कहीं कोई राइट नहीं है और ना हम उस चीज़ों को डिज़र्व करते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे पेरेंट्स की, हमारे एल्डर्स की, हमारे गार्जियंस की हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको 100% पूरा करते हैं। तो बीइंग ह्यूमन, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम चुपचाप बेड पे पड़े-पड़े खाना-पीना ना खाएँ, इंस्टेड और भी बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, प्रॉपर शेड्यूल के साथ काम करना है अपना, ताकि बॉडी की मूवमेंट भी बनी रहे। अदरवाइज़ अभी जो चीज़ें समझ में नहीं आती, ये ग्रोन अप होने के बाद समझ में आती। एंड स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली इस टाइप के चैप्टर क्लास 9-10 में इसलिए दिए जाते हैं कि इस समय आप लोग ग्रोन अप होते हो। अगर इस समय आप सही पाथ पे मूवमेंट नहीं किया आपने, तो ट्रस्ट मी, बाद में जब आप मैच्योरिटी को अटेन कर लोगे, तो उस समय आपके पास रिग्रेट के अलावा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है? खैर एनीवेज़, तो ये चैप्टर से ही रिलेटेड था जो मैंने आपको अभी समझाया। तो फाइनली जब डॉक्टर हैरियट के समझाने के बाद भी मिसेस पैम्परी नहीं मानती हैं और वो अपने डॉग को, ट्रिकी को बहुत ज़्यादा खाना पिलाने खिलाने लगती हैं, ओवरफीड करती हैं, तो बहुत जल्दी वो ट्रिकी जो होता है बीमार पड़ जाता है और बीमार पड़ने के कारण से वेटनरी डॉक्टर, अगेन डॉक्टर हैरियट को बुलाया जाता है और मिस्टर हैरियट जो थे वो अस्पताल ले जाते हैं अपने और वो जानते हैं कि मिसेस पैम्परी जो हैं वो अपने डॉग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और जब जैसे ही उन्होंने कहा, नरेटर ने कहा मिसेस पैम्परी से कि आपके डॉग को मुझे अपने हॉस्पिटल ले जाके रखना पड़ेगा, वहाँ इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो ये बात सुन कर के बेहोश हो जाती, क्योंकि उन्होंने उसको अपने बच्चे की तरह केयर की थी। जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे के लिए अफेक्शनेट होती है, उसको लगाव होता है, उसी तरीके से मिसेस पैम्परी को उस डॉग के साथ लगाव था। ठीक है, तो फाइनली वो कन्विंस हो जाती हैं और जो डॉक्टर हैरियट होते हैं उसको लेकर के चले जाते हैं। अब क्या होता है कि जब डॉग को लेकर के नरेटर हमारे जो मिस्टर हैरियट है वो चले जाते हैं वेटनरी डॉक्टर अपने घर, तो डॉग 2-3 दिन तक कुछ नहीं खाता-पीता है और एकदम कुछ मूवमेंट भी नहीं कर रहा वो, ठीक है? उसके बाद वो क्या करता है, तीसरे दिन वो चारों ओर थोड़ा-थोड़ा देखने लगता है और थोड़ा-सा बड़बड़ाने लगता है एंड 4th डे वो उसने ऐसी शो किया कि वो अपने रूम से बाहर निकल कर के, जहाँ उसको रखा गया वहाँ से वो बाहर निकलना चाहता है और उस डॉग का जो हमारे डॉक्टर थे, डॉक्टर हैरियट जो नरेटर हैं, उनके पास और भी कई सारे एनिमल्स थे, तो कुत्ते भी थे, डॉग्स भी थे। तो वो जो ट्रिकी था, वो ये भी चाह रहा था कि वो बाहर निकल कर के बाकी के डॉग्स के साथ खेलना शुरू करे, ठीक है? तो धीरे-धीरे उसने मूवमेंट शुरू किया और थोड़ा-थोड़ा खाना उसको डॉक्टर हैरियट देने लगे और उसके साथ-साथ क्या होता था कि अब उसको खाने की इतनी ज़्यादा उसको भूखा रखा जाने लगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ओवरफीडेड था, बहुत ज़्यादा उसको खिलाया-पिलाया गया था। तो डॉक्टर हैरियट उसको इतनी ज़्यादा टाइम-टाइम से खाना उसको देने लगे कि अब उसको जब भी खाना वो देखता था ट्रिकी, तो उसको भूख लग जाती थी और वो बाकी जो डॉग्स के जो कटोरे में खाना दिया जाता था, इवन उन कटोरों को भी वो चाटने लग गया था, लिक करने लग गया था, ठीक है? तो फाइनली डॉक्टर्स ने जब उसको नेचुरल हैबिटेट में रखा, उसको नेचुरल तरीके से रखा, जिस तरीके से एक जानवर को रखा जाता है, तो स्लोली ग्रेजुअली उसकी कंडीशन में सुधार होने लग गया और वो बाकी के जो डॉग्स थे, उन डॉग्स से फाइट करने लग गया ट्रिकी अपने खाने के लिए। ये बात जब मिसेस पैम्परे को पता चली कि भई मेरे डॉग ट्रिकी को परेशानी हो रही है, तो अगेन उनके मन में जो माँ वाली फीलिंग्स थी, भावना थी, केयर थी, सिम्पैथी थी, वो सारी फीलिंग्स वापस से जग गई। ठीक है, तो उन्होंने उसके लिए एग्स भेजना शुरू कर दिए, अंडे भेजना शुरू कर दिए, क्योंकि उनको लगा कि ट्रिकी जो है वो अब क्योंकि उसको जब बीमारी है, बीमारी से रिकवर कर रहा है, तो उसको एनर्जी के लिए एग्स चाहिए। लेकिन मिस्टर हैरियट को पता था, अगर उन्होंने डॉक्टर को कि अगर उन्होंने ट्रिकी को एग दिया, तो एग खा करके वापस से उसकी हालत वही हो जाएगी, वापस से वो लेथार्जिक हो जाएगा और फूल जाएगा। तो वो लोग क्या करते थे, मिस्टर हैरियट और उसके साथी, कि मिसेस पैम्परी जो एग्स उनके लिए भेजती थी अपने डॉग के लिए, उस एग को अपने नाश्ते में खा जाते थे। अब मिसेस पैम्परी और ज़्यादा कंसर्न हो गई कि मैं एग भेज रही हूँ, उसके बाद भी मेरे ट्रिकी में सुधार क्यों नहीं हो रहा? तो उसके लिए उन्होंने उसको वाइन की बोतल भेजनी शुरू कर दी कि इसको वाइन पिलाते हैं, शराब पिलाते हैं, तो इससे इससे इसकी हेल्थ में सुधार होगा।
ठीक है। अब अगेन जब वाइन की बोतल मिस्टर हैरियट के पास पहुंची, जो उसके डॉक्टर थे, ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो वो और उसके दोस्त मिलकर के उन्होंने वाइन भी पी लिया। मतलब उन्होंने डॉग्स को कुछ भी नहीं दिया, ट्रिकी को कुछ भी नहीं दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने उसको मिसेस पैम्परी ने ब्रांडी भी भेजा, लेकिन वो ब्रांडी भी हैरियट और उसके दोस्तों ने पी लिया। और धीरे-धीरे क्या हुआ कि वो नेचुरल तरीके से जब वो ट्रिकी को खाना देने लगे और ट्रिकी मूवमेंट करने लगा, बाकी डॉग्स के साथ घूमने-फिरने लगा, उनके साथ अब खाने के लिए फाइट करने लगा, तो फिज़िकल एक्सरसाइज़ होने लगी उसके बॉडी की। और जब फिज़िकल एक्सरसाइज़ होने लगी उसके बॉडी की, तो उसकी जो कंडीशन थी, उसकी जो फूलने की बीमारी थी, वो खत्म हो गई। और एक दिन फाइनली जब डॉक्टर हैरियट को, जो हमारे नैरेटर है, उनको उन्होंने ये देखा कि अब पैम्परी की कंडीशन में सुधार हो गया है, इम्प्रूवमेंट हो गया, तो उन्होंने फाइनली मिसेस पैम्परी को फ़ोन किया कि अब आप आइए और आकर के इसको, डॉग को लेके जाइए। तो जब मिसेस पैम्परी आई, तो डॉग उनको देखते ही बहुत खुश हो गया और खुश होकर के उनके कार में कूद करके बैठ गया। मिसेस पैम्परी ने नैरेटिव से कहा कि भई आपने हमारे लिए जो किया है, मैं इसको कभी भी नहीं भूल सकती, क्योंकि मेरे लिए तो ये कंडीशन, जो ट्रिकी की कंडीशन थी, जिस कंडीशन में मैंने इसको आपके हॉस्पिटल भेजा था, वेटरनरी हॉस्पिटल में भेजा था, वो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल सिचुएशन था। मैंने ये सोचा था कि इसको ऑपरेशन करके इसके बॉडी से मांस का टुकड़ा काट-काट के निकालना पड़ेगा, तब जाके ये सुधार होगा। लेकिन आपने बिना ऑपरेशन किए हुए इसको ठीक कर दिया, इसके लिए मैं आपकी हमेशा ऑब्लिगेटरी रहूँगी, हमेशा आपकी एहसानमंद रहूँगी। और इसीलिए उन्होंने उसको नाम दिया कि ट्रम्प ऑफ सर्जरी, मतलब जो सर्जरी करने की कंडीशन आ गई थी, उस सर्जरी की कंडीशन से हट करके डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया, और इसलिए उसको उन्होंने मिसेस पैम्परी ने कहा कि दिस इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी फॉर मी। तो यही है डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर की समरी। और इसका बेसिक मैसेज ये है कि माँ बाप को बच्चों की उस हद तक केयर नहीं करनी चाहिए कि उनके बच्चे फाइनली उनके लिए ही दुखदाई हो जाए। हर चीज़ की लिमिटेशंस बनाई हुई है। इवन अगर आपको भी अगर ऐसा लग रहा है कि आपके पेरेंट्स आपके लिए ओवर कॉन्शियस हैं, ओवर वरीड हैं, तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन चीज़ों से हट करके अलग से मेहनत करें, अपने गोल को लेकर के डिसिसिव रहें, अपने गोल को लेकर के टारगेट सेट करें और उसको अचीव करें। कभी भी लाइफ में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, थिंग्स को टेकन ऑफ ग्रांटेड नहीं लेना है कि हमें जो चीज़ें आज मिल रही हैं वो कल मिलेंगी। कोई गारंटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है। तो डेस्टिनी हम खुद बना सकते हैं अपना, कोई और हमारी डेस्टिनी नहीं बनाता है। और डेस्टिनी कॉन्फिडेंस से बनता है, ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं। तो यही इस चैप्टर की समरी है। और बस दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग टाइम वॉचिंग आवर चैनल। यू हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस। थैंक यू।